Hi everyone. Hi Ria, how are you? राधे राधे जागृति, कैसे हैं आप? Hi Shivam. I am good. What about you? I am also good Ria. Fine जागृति. Hi Shivam. मैं भी एकदम बढ़िया जागृति. So hi guys, this is Sheetal Chaudhary, your accounts master teacher. And I welcome you all once again to Vedantu Commerce. We all are here for a better future. So let's start this session with something positive. Hi Narendra. Every student can learn, just not on the same day और इन दी सेम वे. हर बच्चा लर्न कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम डे हो और वो सेम तरीके से लर्न करे. वेरी एक्साइटेड. ओके शिवम. So guys, this is your class 11th accountancy session and this is our schedule for today. After my session, you will be having your mentee quiz for economics. तो इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सेशन है at 5 p.m. your mentee quiz for economics with Neha ma'am. At 6 p.m. we will be having class 12th account session and at 7 p.m. we will be having economics session at 7 p.m. with Neha ma'am. So this is your schedule for today. And if you guys are new to our channel Vedantu Commerce, then please take a moment to subscribe to our channel, like this video and share this. तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वरना आप ऐसी वीडियोस और नहीं देख पाओगे. So go and subscribe to our channel for watching more such classes and do like this video, do share this video. And for upcoming notes and session, you may join the Telegram group in which all the teachers will be sharing their notes in the PDF form. तो अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है और आपको नोट्स चाहिए तो सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है. तो अभी जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. The link is in the description box below. Hi Saurabh. Now, if you want to explore your learning skills with us, then you also can take Pro Subscription. You can take Pro Subscription in which we are providing you all of these amazing benefits. We are providing you 2000 hours of live online teaching. You can watch unlimited live classes of all the subject, whether it is accounts, economics, business, mathematics. आप सारी classes यहाँ पर देख सकते हैं और वो भी unlimited. उसके बाद we will be providing you test and assignments containing thousands of questions. So on YouTube, we are not providing you assignments for your practice, but on Pro Subscription, we will be providing you assignment and we will also conduct regular tests for your practice. And we are a pool of 10 plus teachers having more than 5 years of experience. So you can also learn from these teachers. Highly qualified teachers will be teaching you. All these teachers will work on your weakness. सारी की सारी teachers आपकी कमियों पर काम करेंगी. आप जिस chapter में weak होगे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. And all these session will be conducted in English only. सारी की सारी classes किस में होंगी बच्चों? इंग्लिश में होंगी. सो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं प्रो सब्सक्रिप्शन में, जो कि आपको अच्छे मार्क्स लाने में बिल्कुल हेल्प करेंगे. जो एक्चुअल प्राइस है प्रो सब्सक्रिप्शन का फॉर 1 month इट इज 3499, बट राइट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्लैट 20% डिस्काउंट. हम आपको अभी डिस्काउंट दे रहे हैं जिसके बाद you have to pay only 2799 for all the 4 subjects. So go and grab this Pro Subscription right now at flat 20% discount by using my code SCPRO. And the new batches for class 12th are starting soon from 30th March. So go and book your seats for the upcoming batches and ask your friends also. आपका
इको का पेपर है ना, मैं अकाउंट्स पढ़ रही हूँ. रिया, थैंक यू सो मच. आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, यू आर देयर विद मी. बट अगर आपकी इको की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, देन आप इको पढ़ सकते हो. आई कैन अंडरस्टैंड. So, today we are going to discuss the previous year practical question of the chapter Financial Statement. Most of the students have requested me to do this chapter. बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा दो. So here I am today to do this chapter financial statement, which is of 8 marks guys. ये chapter आपके एग्जाम्स में for sure 8 marks का एक फाइनल लंबा सा क्वेश्चन आने वाला है. So आज हम लोग यहाँ पर अपने 8 नंबर की तैयारी करके जाएंगे. Today we will be doing financial statement without adjustment, and tomorrow we will do financial statement with adjustment. तो पहले हम विदाउट एडजस्टमेंट करते हैं, आज बेस बनाते हैं, एंड कल करेंगे विद एडजस्टमेंट. So please be attentive in this session because we are going to prepare for 8 marks. तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए. It's time to start now. And here we have our first question. Hi natural beauty. So starting with the question number 1 of final accounts or financial statement. This is your question. And this is one of the most important adjustment. ये तो पक्का से आने वाली है. I can say that this will come for sure. 100% ये तो adjustment आएगी ही आएगी एग्जाम में. इसको कोई स्किप नहीं कर सकता. हाय हितांश, हाय करण. This is one of the most important adjustment that is of bad debt or debtors. तो चलिए इस एडजस्टमेंट को ध्यान से समझते हैं और अपने 8 नंबर की तैयारी करते हैं. This is your question number 1. Good afternoon हितांश. बेड डेट्स का बैलेंस गिवन है आपको 1600. कितने हैं बेड डेट? 1600. Provision for doubtful debt. Provision is given in the trial balance. अगर provision trial balance में given होता है, if the provision is given in the trial balance, it means that this is old provision. तो आपका old provision कितना है? 5,000. And debtors value is 1,60,000. So हमें bad debt given है, old provision given है और हमें debtors given है. In additional information, it is said that create a provision for doubtful debt at 5% on debtor. हमें बनाना है provision 5% on debtors. Provision कितना बनाना है बच्चों? 5% on debtors. Pass necessary adjustment entry. अभी तक हम लोग क्या करते थे? हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे. Till now we were only focusing on the preparation of final account. Hi हितांश, hi कशिश, hi लकी. यहां पर हमें बोला है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. आप जो एडजस्टमेंट करने वाले हो आज, आपको उसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है. We are required to pass adjustment entry also. तो ये हमारे लिए आई है एक नई चीज. This is new for all of us to pass the adjustment entry, and then we are required to show how will it appear in the financial statement or final account. Hi Vedansh. So this is one of the most important question which is of 4 marks. You are required to pass adjustment entry and you are required to show the treatment of this adjustment in the financial statement. So चलिए start करते हैं इस क्वेश्चन को. The additional information is saying that create a provision
for doubtful debt at the rate 5% on debtors. आपको बनाना है प्रोविजन 5% ऑफ डेटर्स. तो डेटर्स की वैल्यू क्या है भैया? डेटर्स है 1,60,000. You will create 5% provision of it. So 5% of 1,60,000 will be 8,000. कितना प्रोविजन बनाएंगे हम लोग? We will create provision of 8,000. Now provision की एंट्री क्या होगी? What will be the journal entry for provision? So first journal entry will be provision for doubtful debt debit. Provision for doubtful debt debit. Because it is a loss for you. It is a loss for you. तो आप loss को क्या करते हैं? All the expenses and losses are debited. All the expenses and losses are debited. So amount 5% ही है ना? Okay. So provision for doubtful debt debit to bad debt. First of all, what you will do? सबसे पहले क्या करेंगे? जो आपका प्रोविजन होता है हम उसको क्या करते हैं? बेड डेट में ऐड करते हैं. पीएनएल एप्रोप्रिएशन. आयुष क्या जर्नल एंट्री लिखी है? सो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू बेड डेट. टू बेड डेट. जो आपके बेड डेट है आप क्या करोगे? उनको ट्रांसफर कर दोगे ओल्ड प्रोविजन में. सो दिस विल बी योर फर्स्ट जर्नल एंट्री. हमने जो ओल्ड बेड डेट थे 1600, सबसे पहले हमने उन्हें ट्रांसफर किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में. सो द जर्नल एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बेड डेट. कशिश बोर्ड पर भी लिखना ही होता है ना बच्चा. वी कैन ऑल्सो राइटिंग, वी आर ऑल्सो राइटिंग है. बोर्ड पर भी लिखना है, यहां पर भी लिखना है, तो दोनों सेम ही है. सो फर्स्ट एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बेड डेट 1600. द बेड डेट दैट आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट गिवन है वो हमने ट्रांसफर कर दिए हैं. कहां पर? ओल्ड प्रोविजन में. सो प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बेड डेट. अब देखते हैं ट्रीटमेंट. उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे. वी विल पास दी सेकेंड जर्नल एंट्री लेटर. फर्स्ट वी विल शो दी ट्रीटमेंट इन दी पीएनएल अकाउंट. तो ये ट्रीटमेंट हम सबको आती है. वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर. In the P&L account on the debit side, in the P&L account on the debit side, you will first write down bed debt. आप bed debt note down करोगे 1600. In this, you will add the new provision. In the bed debt, we will add the new provision that we have created. 5% ऑफ 1,60,000 हमने प्रोविजन बनाया नया वाला. सो 5% ऑफ 1,60,000 was 8,000. So the new provision is added and you will subtract the old provision. आप क्या करोगे? पुराने प्रोविजन को माइनस कर दोगे. Subtract old provision, that is 5,000. So 9,600 minus 5,000. Now the value that is to be recorded on the debit side of P&L is 4,600. कौन सी वैल्यू आप रिकॉर्ड करोगे on the debit side of P&L? 4,600. Bad debts plus new provision minus old provision. The final value that has arrived is 4,600. So this will be your second adjustment entry. Second adjustment entry क्या होगी? P&L debit. P&L debit side we have recorded two provision for doubtful debt 4,600. This is the final value which is recorded on the debit side of P&L.
to provision for doubtful debt 4600. कशिश आपका बेड डेट कितने थे? बेड डेट्स वर 1600 कशिश, and you have added the new provision. बेड डेट में हम नया प्रोविजन ऐड करते हैं, it is 8,000 sorry. You will add the old provision 8,000. So total क्या हुआ कशिश? 8,000 plus 1,600. The total is 9,600. And from this you will subtract old provision, that is 5,000. इसमें से old provision minus कर देंगे. So these are the adjustment entry that you will pass. But adjustment entries are not that important, but the treatment in the P&L account and balance sheet is very important. According to your exams point of view, journal entry इतनी important नहीं है, adjustment entry इतनी important नहीं है, जितना कि treatment important है. So this is the treatment in the P&L account on the debit side. हमने bad debts लिखे, that is given in the trial balance. Bad debt given in the trial balance 1,600. Then we have added the new provision that we have calculated. हमने calculate किया provision 5% of 1,60,000, 8,000. Now the value is 9,600. From this you will subtract the old provision that is given in the trial balance. So old provision will be subtracted 5,000. So 9,600 minus 5,000, 4,600. This will be debited in the P&L account. Now we will also do the treatment in the balance sheet. Balance sheet में भी treatment करेंगे. So in the balance sheet on the credit, on the asset side, sorry, in the balance sheet on the asset side, हम लोग क्या लिखेंगे? Debtors लिखेंगे. And from the debtors, you will subtract the new provision. बैलेंस शीट में एसेट साइड आपने डेटर्स नोट डाउन करे, उसके बाद यू विल सब्ट्रैक्ट द न्यू प्रोविजन, नया प्रोविजन माइनस कर देंगे, दैट इज 8,000. सो 1,60,000 minus 8,000, your final debtors are 1,52,000. These are your net debtors, 1,52,000. Kashish, trial balance is of 1 year. I am all good, Ishaq. Ma'am, old provision नहीं करेंगे balance sheet में. No, Riya. In balance sheet, you will only record the new provision. Balance sheet में हम लोग सिर्फ नया provision minus करते हैं. यहाँ पर जो old provision होता है, उसकी कोई भी treatment नहीं होती. It is only treated in the P&L account. यहाँ पर balance sheet में old provision का कुछ भी नहीं होगा. Okay, Himani. So this was your first question. I hope that this is clear to everyone. In the P&L, you will add the new provision and you will subtract the, you will add the new provision, you will subtract the old provision. P&L में हम नया प्रोविजन ऐड कर देते हैं, पुराना माइनस कर देते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में हम सिर्फ नया वाला प्रोविजन माइनस करते हैं, ओल्ड वाला कुछ भी नहीं होता यहाँ पर. Hi Star Lord. So I hope that this question is clear to everyone. And this is one of the most important adjustments. So please revise it again. एक बार कोर्स रिवाइज हो चुका है हिमानी, देन यू कैन स्टार्ट विद सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. क्लियर? Ronak sir, please block Star Lord. Now coming to question number 2. So question number 2 is, from the following balances obtained from the accounts of Mr. Ranjit. हमने accounts बनाए हैं of the Mr. Ranjit, the accounts given है. We have to prepare trading account and P&L account.
नाउ रीड दी क्वेश्चन केयरफुली. हमें क्या बोला है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. बहुत सारे बच्चे ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ हमें बैलेंस शीट भी बनानी है एंड दे विल ऑल्सो प्रिपेयर दी बैलेंस शीट विच इज नॉट रिक्वायर्ड. सो रीड दी क्वेश्चन केयरफुली. अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जो क्वेश्चन में नहीं पूछा आप उस पर भी अपना टाइम वेस्ट करके आओगे. सो here we will only prepare trading account and P&L account. So let's see now each and every item and let's see कि कौन सा item कहाँ रिकॉर्ड होने वाला है. Hi Jia. So first we have opening stock. Tell me where you will record this opening stock. एकदम बढ़िया जिया. आपके क्या हालचाल है? बताइए ओपनिंग स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड करोगे? ओके, आई हैव टू आंसर्स. डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, डेबिट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग. ठीक है, एकदम बढ़िया. हम लोग ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन दी डेबिट साइड. नेक्स्ट वी हैव परचेजेस. वेयर यू विल रिकॉर्ड परचेजेस? बढ़िया जिया, छुट्टियां मना रहे हो. So enjoy your time now. Okay, purchases we will also record in the trading account on the debit side. Then sales for the year, where you will record the sales. Yes, in the trading account on the credit side. Next, wages. नेक्स्ट वेजेस. वेजेस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? वेल डन रिया, मोनिका, जागृति, हिमानी, कशिश. वेल डन एवरीवन. Wages is direct expense. We will record in trading account on the debit side. खर्चा है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और ये डायरेक्ट है इसीलिए ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे. Then we have salaries and wages. कहाँ रिकॉर्ड करेंगे salaries and wages? Where you will record this one? Okay, Riya. Congratulations, Riya. You have answered it correct. Ishak, you will not record it in the trading account, Ishak. Well done, Monica. Narendra, trading में नहीं रिकॉर्ड करेंगे. So first salary is written, then wages is written. So you have to focus on the first word. Salary is indirect expense and indirect expenses are recorded in the P&L account. So salaries and wages कहाँ record करेंगे? P&L account में debit side. Okay, Himani, it must be my mistake. By mistake. Then we have advertisement. Where you will record advertisement? कहाँ रिकॉर्ड करोगे एडवर्टीजमेंट को? ओके रिया, मोनिका, हिमानी, डेबिट साइड. Yes, advertisement is also indirect expense. We will record in the P&L account debit side. Then we have bad debt. कहाँ रिकॉर्ड करोगे bad debt को? Bad debt. So bad debt is a loss. You will record in the P&L account debit side. Next, rent. Rent will be also recorded in the P&L account debit side. Then discount. Discount का कौन सा बैलेंस है? Debit. If discount is having debit balance, then it will be recorded in the P&L account on the debit side. अगर ये credit balance होता, if it was discount credit, then हम इसको P&L में credit side record करते. अभी कहाँ record करेंगे? Debit side. Commission paid, again indirect, P&L, debit side. Sales expenses. बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये तो सेल्स एक्सपेंसेस है, सेल्स तो हम ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो इसको भी ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन नहीं. यू विल रिकॉर्ड इट इन दी P&L account debit side. And repairs also you will record in the P&L account debit side.
So trading के only 4 items हैं. There are only 4 items related to the trading and all other items are related to the P&L account. Now tell me, closing stock कहाँ record होगा? Where you will record closing stock? Okay, Monica. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन हमें तो वो बनानी नहीं है. Closing stock is also recorded in balance sheet asset side, but we are not required to prepare balance sheet. So this is your trading account. On the debit side, we have recorded opening stock, purchases, and wages. On the credit side, we have recorded sales and closing stock. जो भी difference आया, the total of credit is 46,500 and the total of debit is 30,500. So the difference between both, एक minute, total of debit is 32,500. So difference between the both is gross profit. Credit side जो है वो ज़्यादा है, credit side is more than the debit side, so there will be gross profit of 14,000. कितने का profit हुआ? 14,000 का. How to find gross profit from the total of credit? You will subtract the total of debit. 46,500 minus 32,500. Your gross profit, Ishaq, is 14,000. Do the total of both the sides. The difference will be either gross profit or gross loss. So here we have gross profit because credit side is more than the debit side. Hence, it is profit. But in case your debit side total exceeds the total of credit, if debit side total is more than the credit side, then it will be gross loss. अगर debit side ज़्यादा होती credit side से, then the result will be loss. Hi Punjab foodies. So this is your trading account. Now, while preparing P&L account, this gross profit will be transferred. You will transfer this gross profit to the credit side of P&L account by gross profit 14,000. We have transferred the gross profit. Prem Soni, prepaid expense is an adjustment that we will be covering tomorrow. Right now, we are doing financial statement without adjustment. Tomorrow, we will discuss financial statement with adjustment. So, you can join me tomorrow at 4 p.m. After transferring the gross profit, you will write down all the indirect expenses on the debit side. You have to write down all the indirect expenses on the debit side. Then again, you will find out net profit or net loss. So total of credit side is 14,000 and total of debit side is 9,800. Total of credit side 14,000. Total of debit side 9,800. So 14,000 minus 9,800. The difference is your net profit. So net profit will be 4,200. Net profit will be 4,200. सैलरी डेटर्स तो एसेट है, आप एसेट साइड रिकॉर्ड करोगे और एक्रूड इनकम भी एसेट है. एक्रूड इनकम इज एन एडजस्टमेंट. It is recorded in two account, P&L credit side and balance sheet asset side. हम इसको और अच्छे से कल करेंगे कशिश. We will do practical question of this tomorrow. So this is your net profit, that is 4,200. अगर हमें बैलेंस शीट भी बनानी होती, if we were required to prepare balance sheet also, then
we will add this in the capital. So the net profit is transferred to the capital. It is added to the capital. So this was your second question. I hope that this is clear to everyone. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Clear, yeah. Now coming on to question number 3, and this is your question. From the following balances, prepare the final account. हमें क्या बनाने हैं? Final account, which means you have to prepare trading account, you have to prepare P&L account, and you have to prepare balance sheet. So we have to prepare trading account, P&L account and balance sheet. हमें तीनों बनाने हैं इस क्वेश्चन में. Hi Krishna. So now let's see where we will record these items. कहाँ record करेंगे हम लोग इन items को? Opening stock कहाँ record करेंगे? Trading account, debit side. BR means bills receivable. Bills receivable is an asset, so record in balance sheet. Sales is direct income, so trading account, credit side. Purchases, direct expense, trading account, debit side. Creditor is a liability. Liabilities are recorded in the balance sheet. Then salary is indirect expense. You will record in the P&L account, debit side. Insurance is indirect expense. Indirect expense, P&L account, debit side. Then debtors are assets. Assets will be recorded in the balance sheet. Then we have carriage. If nothing is mentioned that whether it is carriage inward or outward, so you will by default assume that it is carriage inward, and it will be recorded in the trade account, debit side. Carriage will be recorded in the trading account, debit side. Then we have some other items. Commission, if nothing is mentioned, what you will assume? You will assume that it is commission received. So commission you will record in the P&L account, credit side. Then interest paid, P&L account, debit side. Printing, P&L account, debit side. Bills payable is a liability, so balance sheet. Return inward means sales return. You will subtract from sales. Return inward means sales return. You will subtract from sales. Returns out means purchase return. You will subtract from purchases. रिया, फिर तो कमीशन पेड होना चाहिए था ना. कमीशन बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं कमीशन रिसीव्ड है. सो लेट मी शो यू. ओके, तो यहां पर उन्होंने यही माना है कमीशन पेड. ओके, सो इट इज एक्सपेंस. आप यही मानोगे कमीशन पेड है. इट इज बाय डिफॉल्ट कमीशन पेड. थैंक यू रिया. By default we will assume that it is commission paid. Interest हमने paid ही माना है, तो हमें दोनों में same वो लेनी पड़ेगी assumption. So we will assume that both are paid. Then bank is your asset.
Bank is your asset, so you will record in the balance sheet asset side. Then rent and taxes. Rent and taxes are indirect expense. P&L account debit side. Furniture is your asset. You will record in the balance sheet. Capital is your liability. You will record in the balance sheet liability side. So these are all the item. Last में हमें given है closing stock. Closing stock will be recorded in the trading account credit side and in the balance sheet asset side. So हमने सारे items को identify कर लिया. We have identified each and every item that कौन सा item कहाँ record होगा. After that, you will start preparing the trading account and P&L account. So this is your trading account, opening stock. Then from purchases, you have subtracted purchase return. Then carriage on the debit side. On the credit side, sales. From sales, you have subtracted sales return. Then closing stock. After recording all the item, you will do the total. You will do the total. So 68,700 plus 15,000, total of credit is 83,700. And total of debit side is 50,950. So credit side total is more than the debit side. So it will be gross profit. It will be gross profit 32,750. This is your gross profit, which will be transferred to the credit side of P&L. Which will be transferred to the credit side of P&L by gross profit 32,750. Why gross profit is on credit? You have to write down, first of all, gross profit is on the debit side of trading account. Gross profit is not on the credit side, it is on the debit side of trading. And why it is on debit side? Because you have to write down it on the smaller side. Credit side is more than the debit side. So debit side is smaller, you will write it on the debit side of trading account. And when you will transfer it to the P&L, it will be transferred to the credit side. Now after transferring the gross profit, you will debit all the indirect expenses. You will debit all the indirect expenses, insurance premium, salary, interest paid, printing, rent, and commission. Then from the gross profit, you will subtract all the indirect expenses. From the gross profit, you will subtract all the indirect expenses and your net profit is 25,500. As usual, your net profit is 25,500, which will be added to capital. So this is your balance sheet. On the asset side, we will record all the assets. Bank, bills receivable, debtor, stock, and furniture. On the liability side, you will record all the liabilities, bills payable, creditor, and capital. And in the capital, we have to add the net profit. In 7,100, you will add 25,500, the net profit. The final capital is 32,600. Then do the total of both the side and it should be equal. If it is not equal, then your answer is wrong. अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल नहीं आया, इसका मतलब आपने कोई गलती करी है.
We can make new account of capital. Where you will make that new account? No, Riya, that is not compulsory to write the classification current asset and fixed asset. आप directly assets को लिख सकते हो, वो जरूरी नहीं है. Shivam, I'm not getting you. So now tell me, is this question clear to all of you? Is this question clear to all of you? Yes or no? Clear. So, guys, if you want to solve more previous year question of final account, then you can take Vedantu Commerce Pro Subscription. अगर आपको ऐसे और questions हमारे साथ solve करने हैं, you want to solve more practical question with me, then you can take Vedantu Commerce Pro Subscription, in which we are providing you all these amazing benefits which are going to help you for sure in scoring good marks. The actual price of this Pro subscription is 3499, and right now we are providing you flat 20% off, after which you have to pay only 2799 for all the 4 subjects. So you have to pay 2799 for all the 4 subjects, which means only 699 for one subject. So guys, what are you waiting for? Go and grab your Pro subscription right now at flat 20% discount by using my code SCPRO. And I would love to see you all on Pro subscription in next session in class 12th. In which year you cleared your class 12 boards? 2016, 5 years back. So for upcoming session and for upcoming notes, you guys may join the official Telegram group Vedantu Commerce, in which all the teachers will be sharing the notes in the PDF form. And if you guys are new to this channel, then please go and subscribe to our channel for more such classes and for all the notifications. And also do like this video and share this with your friends. This is your maths schedule. You will be having your mentee quiz in mathematics on alternate day, Tuesday, Thursday and Saturday at 11 a.m. Shivam, already we are doing the questions of sample paper and previous year paper. So the questions that we are discussing right now, these all are the questions from the previous year paper. So we are already doing that which you are asking. हिमानी मैम, मुझे पूछना था, मतलब एक बार बहुत पहले एग्जाम्स हुआ था, कोर्स एक बार देखना है, तो कैसे स्टार्ट करूँ, थ्योरी से या प्रैक्टिकल से? फर्स्ट स्टार्ट विद प्रैक्टिकल, देन एट द एंड यू हैव टू डू दी थ्योरी. थ्योरी हमेशा एंड में करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग याद करोगे थ्योरी को, तो अगर आप सबसे पहले थ्योरी करोगे और आप बाद में प्रैक्टिकल करोगे तो आप थ्योरी भूल जाओगे. ऑलवेज लर्न थ्योरी और ऑलवेज डू दी थ्योरी एट द एंड, जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो वो फ्रेश रहेगा, आपको एग्जाम में सब कुछ याद रहेगा. So guys, that's it for today. Now see you all in the next class tomorrow at 4 p.m. with the most important class, advanced level question of financial statement with adjustment. कल हम लोग एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे और हम लोग important एडजस्टमेंट्स कल कवर करेंगे. So now it's time to sing the song. I know guys, गाना है, I remember it. Thank you Jagriti. Okay, Riya, song गा देते हैं. Wait. वो तरसती है निगाह मुझे नहीं आएगा, और आज वो मेघना नहीं आई है. मेघना ने मुझे वो यारी गाना याद करने को कहा था, बट मैंने वो गाना सुना, दैट वाज पूरा पंजाबी गाना था, तो मुझे उसके लिरिक्स ही याद नहीं हुए.
अभी यारी नहीं गाया वो, मैं गा भी नहीं पाऊंगी कभी, मुझे उसकी लिरिक्स याद ही नहीं हो रहे थे, इतनी ज्यादा पंजाबी थी उसमें. हाय सचिन. सो ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग. ओ मेरा पहला प्यार तुसी तू है जानदा, सानू कट्ठियां ने हो गए किन्ने साल. ओ मेरा पहला प्यार तुसी तू है जानदा, सानू कट्ठियां ने हो गए किन्ने साल. मैनू दूजी वारी प्यार होया सोनेआ, दूजी वार भी होया है तेरे नाल. ओ मैनू दूजी वारी प्यार होया सोनेआ, दूजी वार भी होया है तेरे नाल. हाय वे दूजी वार भी होया है तेरे नाल. मैं किसे होर वल देखा मेरा दिल करे ना, हथ मेरा होर कोई हथ पड़े ना. किसे होर वल देखा मेरा दिल करे ना, हथ मेरा होर कोई हथ पड़े ना. गल्ला मेरी आही चक गाने लिख दे, लोकी कहंदे जानी लिख दे कमाल. मैनू दूजी वारी प्यार होया सोनेआ, दूजी वार भी होया है तेरे नाल. हाय वे दूजी बार भी होया है तेरे नाल. That's it. गा दिया. Thank you Sachin. Thank you so much. Thank you Jagriti. So thank you everyone. मैम बहुत ही समझ नहीं आया करण. Thank you Shivam. Thank you so much. So thank you guys for watching this session. If you really like this song, then please give this video a big thumbs up. And now see you all in the next session tomorrow at 4 p.m. Till then, good night, have sweet dreams and take care. आप इतना अच्छा गाना कैसे गा लेते हो? बहुत प्रैक्टिस कर रही है मैंने ये, मतलब इस सेशन से पहले आई वॉज प्रिपेयरिंग. सो आप मुझे बहुत बड़ा टास्क दे देते हो, मुझे भी होमवर्क करना पड़ता है. आई हैव टू spend 15 to 20 minutes to prepare for that. So thank you everyone. अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. So bye guys.